السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gazvaya Tabuk. Tabuk gazvası ile ilgili bir şeyler anlatıyordum. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklar Peygamber Efendimiz'e de işte eziyet çektirmeye de çalışırlardı. Bunun arkasında, bu gazvenin arkasında bu münafıklar ve Yahudilerin de entrikalar vardı. Onların entrikalar işi yaramayınca onlar Peygamber Efendimiz zarar vermeye başaramayınca Peygamber Efendimiz öldürme planı da işe yaramadı. İşte bu bir son darp indirme çabalardı. Eski o her zaman olduğu gibi Allah-u Teala'nın desteği olmasaydı onlar biz gördük ki eğer Allah'ın desteği olmasaydı Müslümanlar yok olurdu. Ama Allah-u Teala her zaman Müslümanlara olağanüstü bir şekilde başarı nasip etti. Hunayn Savaşı'nda da öyle oldu. Her tehlikeli anda Allah Peygamber Efendimiz'e olağanüstü bir şekilde destek verdi. Onu korudu. İşte aynı şekilde bu desteğini bu savaşta, bu savaşında olduğunda görüyoruz. Bu aslında ölüm vadisinden geçmek demekti. Sağlam bir şekilde Tabuk'a varmak. Oraya varmak ve sonra Roman askerlerin ortadan kaybolması, bunlar olağanüstü bir şeydi. Ve etrafındakilerin oradakilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine gelip cizyeyi kabul etmeleri, kabilelerin, oradaki Yahudilerin vesaire hepsine gelip böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teslim olması, bu münafıkların planlarının hiç başarısız olduğunu gösterdi ve bunun neticesinde Müslümanlar elhamdülillah sağlıklı bir şekilde Medine geri geldi ve başarılı bir şekilde geri geldiler. İşte münafıklar başarısız olunca son oklarını atıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine gelmesini engellediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri engellemeye çalıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri gelmek isteyince. İşte onlar düşündüler ki belki de bunlar yolda Tabuk gibi bir yere çıkınca bunlar yolda ölürler. Geri sağlam bir şekilde geri gelmezler. İşte bundan dolayı, yani bu düşüncelerinden dolayı münafıkların büyük reislerin hiçbirisi bu gazvaya çıkmadı. Ve onları muhalif propaganda yapmaktan hiç de geri kalmadılar. Elinden geleni yaptılar bu konuda.
तब तक नहीं उठा सकते थे onları देवबंदी ना हुई हो bu planın geriye devreye soktular. İki yol vardı dönüşte. कि वापसी पर Bir dar bir de geniş. कि जहाँ वादी में दो रास्ते हो रहे थे एक वसी मैदानी रास्ता था और एक तंग रास्ता जो एक दुश्वार गुजार ऊंची घाटी O- से होता हुआ रास्ता Ve bu dar yol biraz kısa yoldu. शॉर्टकट भी था और Onlar bir plan yaptılar. Dediler ki bu oradan o dar bir yoldan geçerken कि जब ऐन घाटी की बुलंदी पर से सारा gece vakti iken çok gece बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो एक- ऐसे वक्त में कि जब iken gece vaktinde सफ़र रात के वक्त हो रहा था Peygamber उस वक्त Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devin etrafına करीब ये सारे मुनाफिक münafıklar hepsi toplanacak किसी न किसी तरह ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesini के किनारे की तरफ ज़बरदस्ती हाँक दिया जाएगा और कजावे की रस्सियों को yukarıdan bir şekilde aşağıya doğru yürütecekler ve onun सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाई में bir kuyuya गड्ढे में düşmesini gece vaktinde sağlanacakmış, ya sağlanacaktı. Öyle bir plan yapmışlardı. खाई में गिर जाएगी और रात के अंधेरे में इसको Nitekim समझ लिया जाएगा Hazreti Urve bin Zübeyir şöyle anlatıyor. फलाना हमले की तरफ नहीं Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem चुनाचे Tabuk'tan Medine'ye doğru geri döndüğünde कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम münafıkların bir cemaati onu öldürmeye niyetlendi तो मुनाफिकीन की एक जमात ve आपको yolda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yüksek bir yerden कि आप aşağıya रास्ते में किसी घाटी की चोटी से atmak için bir plan yaptı mı tam o sırada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların bu अल्लाह ताला entrikasını haber verdi. मुनाफिकीन की इस साजिश से आगाह कर दिया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hiç kimse नहीं जाएगा o vadi tarafından gitmeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanındaki üç sahabi hariç. आपने कहा मैं Hazreti Huzayfe bin Yaman, की तरफ से बाकी सारे मैदान की तरफ से जाएं Hazreti Hamza bin Hamer Aslami, जो साथी थे आपके Ammar bin Yasir. हुज़ैफा बिन Bu üç sahabiydi. हज़रत हमजा Diğer अमर असलमी और हज़रत अम्मार बिन ordu mensuplar hakkında dedi ki o vadi içindeki geniş bir meydandan geçecektir. से गुजरेगा रास्ते की तब्दीली के इस अचानक ऐलान से Buna rağmen bu münafıklar बंदी खत्म होती नजर kendi लेकिन ये फिर planlarını अपने नापाक इरादे अमल करने से बाज नहीं आए planlarını işlemekten geri kalmadılar. Onlar dediler ki düşündüler ki 15 yakın kişi कि ये अपने yüzlerini örtüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesini aniden koşturmaya ve onu korkutmaya çalışacaklar. Öyle bir plan yaptılar. करके बितका दें ताकि Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan yürürken हो जाए जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे o arkasında birilerinin olduğunu hissetti. इसी असनाब में कि आप घाटी में चल रहे थे Onlar yaklaştılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesini korkutmaya çalıştılar. वो आपके पास आ गए और उन्होंने Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye şöyle dedi. की वजह से Onlara सामान भी गिर गया चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने onları oradan uzaklaştırmaya emretti. इन मुनाफिकीन पर हमला Ve Hazreti Huzeyfe onların हज़रत हुज़ैफा डंडे से biniklerini मारने लगे sopayla dövmeye başladılar. एक तरफ Ve münafıklar böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların tuzağından haberdar olduğunu anladılar. मुनाफिकीन जान गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मकर से आगाह हो चुके हैं Nitekim onlardan uzaklaşıp normal orduya katıldılar, askere katıldılar. घाटी से नीचे उतर आए Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Huzeyfe, हज़रत हुज़ैफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम benim आपने süvarimi yani bineğimi तू मेरी सवारी को arkadan vur çünkü korkmuştu. और ए अमार तुम उसे आगे Bir rivayet şöyle var. Hazreti Huzeyfe şöyle diyor. ऊँटनी थी Biz oraya vardığımızda आ जाए
एक 12 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i durdurdu. हुज़ैफ़ा बयान करते हैं Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem जब हम घाटी में पहुंचे onlara meydan okudu. इस घाटी में आपको Onlar kaçtılar. जब मैंने Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem कर दिया तो bize sordu, siz onları tanıdınız mı? वो पीठ फेर कर भाग गए रसूलुल्लाह Biz dedik hayır tanımadık ya Resulullah. क्या तुमने उन्हें पहचान लिया है हमने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह Ancak biz bineklerini tanıdık. नहीं पहचाना क्योंकि उन्होंने निकाब ओढ़े हुए थे और अंधेरा भी था Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar kıyamete kadar münafık olarak duracaklar buyurdu. लोगों को सवारियों की बड़ी पहचान होती थी आपने फरमाया ये लोग क़यामत तक मुनाफिक रहेंगे और क्या तुम उनके इरादे को जानते हो Siz फिर आपने सवाल onları tanıyorsunuz dedi. किया जो साथी थे कहते हैं Onlar hayır dediler. कि नहीं Ne yaptıklarını biliyor musunuz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar hayır dediler. Onlar burada अल्लाह के रसूल beni düşürmek için plan yaptılar dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. हमने अर्ज़ किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके कबीलों की तरफ Onlar नहीं भेजेंगे ashab dedi ki कि हर कौम onları किसी के सर को öldürülmesin mi ya Resulullah? घुसला दी जाए कत्ल किया Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır ben istemiyorum. İnsanlar चाहता कि अहले अरब bu kendi milletini öldürüyor demesinler. कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के कातिल Bazı rivayetlere göre बाद रवायात के मुताबिक Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada vahiy indi. अपनी ऊँटनी पर ही थे कि Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'yi çağırdı. हज़रत हुज़ैफ़ा करीब ही खड़े थे Ben sana dedi bir sır paylaşmak istiyorum. तो उन्होंने अर्ज़ किया मैं हुज़ैफ़ा हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुमसे एक Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu saldırıya gelenlerin her birisinin isimlerini राज़ करना Hazreti Huzeyfe'ye anlattı ve dedi ki bu sır kimseyle paylaşma. एक एक का नाम Bunlar münafıktırlar. का नाम लेकर बताया और ये भी फरमाया कि मुझे उनकी नमाज जनाजा पढ़ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayete göre और ये मुनाफिक 12, 13 veya 15 kişinin adını söyledi. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 या 13 Hazreti Huzeyfe'ye मेरा नाम बताए sır olarak söylediği için o da bu isimleri kimseye açıklamadı. फरमाया था कि किसी को ये राज बताना नहीं इसलिए हज़रत हुज़ैफ़ा ने कभी भी ये नाम किसी को नहीं बताया यहाँ तक कि हज़रत उमर के Hazreti Ömer उनको जब हज़रत उमर Hazreti Huzeyfe'ye कि ये उस वाक़े के ये गवाह है तो नाम पता है तो हज़रत उमर ने ये तरीक़ा इख्तियार फरमाया कि Hazreti Huzeyfe böyle birisi yakında Hazreti Ömer'in şubetinde तो हज़रत उमर Hazreti Huzeyfe öldüğünde cenazesini yanına götürürdü. साथ ले जाते कोई फौत होता अगर कोई आदमी उन शाह Oraya Huzeyfe gitmekten हज़रत उमर को शक özür bildirdiyse हज़रत हुज़ैफ़ा को बाजू पकड़ के साथ जनाज़े Hazreti Ömer onun münafık olduğunu anlardı ve cenazesine gitmezdi. से इनकार कर देते तो हज़रत उमर समझ जाते Onlar कि ये वो लोग हैं 14-15 kişiydi. पर ना जाते सही 12 एक रिवायत के मुताबिक वो 14 या 15 थे लेकिन साथ ये वजाहत भी है कि 12 तो वो O मुनाफिक थे 12 kişi münafıktı. Resulullah öldürmeye gelmişti ama 3 kişi जो इस वक्त घाटी पर तो चढ़े थे onları ये ऐलान नहीं सुना o ilanı duymadıkları için तैयार करने को जो है मैं oraya इसलिए वो 3 अफराद o tepeye çıkmışlardı. Onun için onlar mazur görüldü. औस कबीले के सरदार हज़रत उसैद बिन हुज़ैर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि गुज़श्ता शब बाद मुनाफिकीन ने ये इरादा किया था कि वो घाटी में İşte हमेशा करेंगे münafıkları और रात की gece vakti का तंग काट देंगे और उसके Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in कि वो तेज़ चले यहाँ तक कि वो मुझे मेरी ऊँट से गिरा देंगे devesini bir şeye batırıp bir कि या रसूलुल्लाह dikenli bir şeye batırıp onun hızlı koşmasını sağlayacaktı ve bu şekilde o yüksekten aşağıya düşecekti ve böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürme planı yapmışlardı. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाएगा हम कब तक इनसे मजाक करेंगे हालांकि आज वो यानी मुनाफिक किल्लत में हैं और जलील हो चुके हैं Birisi dedi ki रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया मैं पसंद नहीं करता कि लोग कहें कि जब उसके यानी यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुशरिकीन के दरमियान जंग ख़त्म हुई तो मोहम्मद Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki bunları öldürülsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki
kimse demesin, Resulullah dedi ki hayır bu kendi ashabını öldürüyor. नहीं है, Kimse demesin. तो आपके साथी कब हैं ये? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Hazreti क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह? Usayd dedi ki ya Resulullah तो सैयद ने कहा बेशक करते bunlar ashab değil, bunlar münafıktırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlar kelime-i şehadet getirdikleri için ben onu öldürmeyeceğim. आपने फरमाया क्योंकि वो कलमा शहादत का एक İşte bu devirde bu mollalar, fatva veren mollalar bunlar okumuyorlar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davrandıklarını. जो फतवे देते हैं कलमा पढ़ने वालों को कत्ल कर दो, उनको ये शाह सामने रखना चाहिए। Medine'deki münafıklar हज़रत मुस्लिम आऊद bunlar öğrenince फरमाते हैं yani savaş कि जब olmadığını öğrenince ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapasağlam savaşmadan geri geldiğini öğrenince और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ve खैरियत से वापस आ रहे हैं, ve münafıkların planları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aşikar olduğunu जाहिर हो गया। anladılar ve zannettiler ki biz artık अब हम सजा से नहीं cezadan kurtulamayacağız. रास्ते पर चंद आदमी एक ऐसे रास्ते पर बिठा दिए जो नहायत तंग थे और जिस पर सिर्फ एक एक सवार गुजर सकता था। जब आप इस जगह के करीब पहुंचे Onları तो आपको अल्लाह ताला ने वही से बता दिया Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir plan kurdular. एक सहाबी को Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem देखो bir वो सवारी को Allah-u Teala ve vahiy yoluyla durumu anlattı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem जो इस तरह छुप işte bir मुखलिस sahabiye oraya gönderdi. O sahabi oraya vardıklarında जैसा कि हमला करने वाले onlar oradan kaçtılar. Bunlar işte farklı rivayetlerdir bu konuyla ilgili. भाग गए वो। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका ताकुब करना मुनासिब मालूम ना हो। İşte bu savaşa katılmayan münafıklar türlü मुनाफिकों ने इस जंग mazeretler bildirdiler. में हुए थे, किस्म किस्म की मुआवजतें करनी शुरू कर दी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कबूल कर लिया। लेकिन अब वक्त आ गया था कि मुनाफिकों की हकीकत मुसलमानों को आश्कारा करके कर दी जाए। चुनांचे बता दिया गया। İşte hani bu farklı rivayetlerde ama olay aynıdır. आगे जाने का एक किस Ki onlar yani nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zarar vermeye çalıştılar. İşte olay budur zaten. कोशिश Ama farklı rivayetler var. आम सलम को नुकसान Mekke fethedildikten sonra जैसा कि जिक्र münafıkların के मक्का planları ve entrikaları hızlı kazandı. में Onlar Arabistan'daki उन्होंने देखा kabilelerin कि अरब के इर्द गिर्द kabilelerin güçlerini kaybettiğini öğrendiklerinde ताकत खो चुके हैं, ve fethedildiklerini öğrendiklerinde तो अब उन्होंने अरब से बाहर कैसे रोम जैसी बेरोनी और बड़ी ताकत onları मदद मांगने का मंसूबा बनाया। Medine içinde bir merkezlerini kurmasını istediler. Devamlı olarak orada toplanıp böyle entrikalar kurulacak merkez yapmalarını karar verdiler. इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशी मंसूबाबंदियां करें, Ama öyle bir merkez olacaktı ki kimse onlardan şüphe etmeyecekti. लेकिन वो मरकज ऐसा हो कि दूसरे मुसलमानों को Nitekim शक भी ना गुजरे। चुनांचे अबू आमिर जो कुछ अर्सा मंजर आम से गायब रहा था, वो अचानक से Abu Amr Rahab और मुनाफिक adil birisi münafık प्रोपेगेंडा करने वाला ortaya çıktı. उसको अबू O dedi ki siz राहब कहना शुरू कर दिया। bir उसने ये तजवीज़ दी mescid inşa edin. कि तुम लोग को Bu merkez olarak. Abu Amr bu rahip olarak meşhurdu ve Hazreç kabilesine aitti. में मजीद मिलता है। अबू आमर राहब के नाम से मशहूर था, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince रखता था। bu Mekke'ye gitmişti खुदात में इसके बारे में बयान ve Kureyş'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde kışkırtıyordu savaş için. अबू आमिर मक्का चला गया, Ve derdi ki benim milletim bana tabidir. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग पर उभारा और कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। O Uhud savaşında Kureyş'le beraberdi. जब तुम मोहम्मद से जंग करोगे तो हम तुमसे İşte Mekke fethedilince o çok मैं कुरैश के साथ शामिल था। इस्लाम की तरक्की देखकर अबू आमिर सख्त परेशान हुआ और हसद की आग में जलने लगा। उसने मैदान o zaman गड़े o Uhud savaşında yani जिनमें से एक गड़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरकर शदीद जख्मी भी हुए। dedi ki kabileme ait olanlar ben Ebu Amir'im. तो अबू आमिर ने Onlar dediler ki दोबारा ey fasık कबीले के लोगों
Sana hiç biz लेकिन hoş geldin demiyoruz. हो चुके थे, उन्होंने उनसे जवाब दिया कि ए फासिक, Seni lanet ediyor. Çünkü onlar Müslüman olmuşlardı. Dedi ki और उन्होंने उसे बुरा भला कहा benim और लानत भेजी। इस पर अबू आमिर ने milletim कहा, मेरे बाप benden sonra bozuldu. इसके बाद अबू आमिर के कबीले के बहुत से लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे, Ebu Amir'le beraber de पहले ही वाक़या हो चुका था उससे। 50'ye yakın kişi onunla beraber gitmişti Mekke'ye. जब ये अबू आमिर गया तो वो लोग भी चले गए थे इसके साथ, जो मुसलमान नहीं हुए थे। Ebu Amir'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beddua etmişti. 50 थी। रवायात में Şöyle demişti. अबू आमिर के खिलाफ Bu vatandan uzak जिक्र मिलता tenha bir yerde ölsün. है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Nitekim अब दुआ की कि ये Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında एक रिवायत में है dedi ey Muhammed रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sallallahu aleyhi ve sellem sen hangi şeye doğru çağırıyorsun? तो अबू आमिर आपसे मिला Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dine hanife doğru सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम किस चीज़ की तरफ बुलाते हो? ki sen de onun arayışında olduğunu iddia ediyorsun. Ona doğru çağırıyorum. बुलाता हूँ वही दीन जिसकी तुम खुद भी तलाश में होने का दावा करते हो। Ona Resulullah İslam'a onu davet etti. İslam'a onu davet etti. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, O kendisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme उन्होंने उसे इस्लाम की kötü sözler söyledi. मगर इसने इनकार कर दिया, उसने हसद किया और आपको बुरा भला कहा। Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki aramızdan kim yalancıysa Allah Teala onun yabancı ve vatansızlık durumda öldürsün. Ölüm nasip olsun ona. अल्लाह उसे अजनबी और बेवतन करके O dedi Allah yalancıya böyle yapacak. वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जवाब दिया, हाँ, अल्लाह झूठे के साथ ऐसा Sonra o milleti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine kışkırtmaya devam etti. कौम के लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से रोकता रहा Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeler her gün ortaya çıkıyordu. और देता रहा। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ebu की निशानियाँ और मोइज़े रोज़ Amir'in हो रहे थे। kabiledeki insanlar पैरोकार भी बढ़ते जा रहे थे। खास तौर पर अबू आमिर Müslüman olmaya devam ediyordu. Bunun için de o daha çok kızıyordu Ebu Amir. वो शामिल हो रहे थे ना इस्लाम में, जिससे अबू आमिर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। O mescid मुनाफिकीन के साथ मिलकर एक मस्जिद बनाई, जिसे तारीख़ी zarar मस्जिद ज़रार yapmak istediği bir mescid yapmak istedi. Bunu mescid zarar diye biliyoruz. İslam tarihinde orada insanlar münafıklar toplayıp और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि insanlar aleyhinde Resulullah'ın aleyhinde bir entrikalar yapmak istiyordu. Planlar kurmak istiyordu. वसल्लम साजिशों को कहने लगा Dedi ki siz कि तुम मस्जिद तमीर करो और अपना Dedi ki siz böyle bir mescid yapın. Ben büyük bir orduyla geleceğim ve o जार लेकर siz orada ve oradan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kovacağız Medine'den. मदीना से निकाला जा सके। फिर ओ अबू आमिर रोमी सल्तनत की तरफ निकल गया Romalı और शाम में रोमी सल्तनत imparatoruyla görüştü ve onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı savaş açmak istediğini और मुसलमानों söyledi. को जंग पर आमादा करने की कोशिश की। Ve dedi ki के बारे में ये कहा कि ये कमज़ोर, गरीब और थोड़ी तादाद वाले लोग हैं, इनके दुश्मन ज़्यादा हैं, तुम्हें इनसे डरने की Sen ज़रूरत नहीं। और उसे कहा कि अगर güçlüsün, güçlü bir padişahsın. Eğer sen Müslümanlara karşı adım atmazsan o zaman काम न किया तो मुस्तकबिल ileride senin için zor günler seni bekliyor. हरकल ने उसे अपने पास ठहराया Heraklios, और वादा किया evet तुम्हारी मदद की ben जाए। sana yardımcı olacağım dedi. आमिर ने Ve o böylelikle kendi yandaşlarına दार müjde verdi. Siz böyle bir mescid yapın. के अनकरीब बहुत बड़ा लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा पर Nitekim onlar Kuba'da, münafıklar Kuba'da bir cami inşa ettiler. तमीर करो। इस मकसद के पेश नज़र मुनाफिकों ने Ama onun गवाह bu ने एक मस्जिद बनाई। इस मस्जिद को मस्जिद onun bu dedi de लेकिन yani bu isteği de gerçekleşemedi çünkü o Suriye'de, Şam'da o tenhayken बेवतनी की हालत में मर गया। vefat etti. Bazılara göre 9 Hicr'de, bazıları बेटी दुआ इसमें इख्तिलाफ 10 Hicr'de vefat etti orada. बात के नज़दीक ये 9 Münafıklar bu cami inşa ettiler kendilerinde. लेकिन बहरहाल तन्हाई में मरा। Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine geldiler की तामीर मुकम्मल कर ली। ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem दरख्वास्त की istedi, dua et, rica ettiler ey Allah'ın Resulü
sen bir de gel ve orada bize bu caminin açılışını yap. नहाद मस्जिद के इफ्ताह की दरख्वास्त लेकर आए जब आप Orada biz de ihtiyaç sahiplerine ve o yolculara bir yardımcı olacağız. हमने बीमारों Ve orada bizim için gelip bize namaz kıldırın. और बारिश वाली रात के लिए एक मस्जिद तामीर की है हम चाहते Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki हैं ben meşgulüm şu an, geri döndüm de yolculuktan size मैं इस वक्त bakacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk gazvesinden geri döndüğünde सफर से वापस आएंगे ve orada çadırında gecelediğinde तशरीफ लाए और जी अवान नामी जगह पर खेमा जन münafıkların bu cami hakkında ayet indi. दरमियान एक घंटे का फासला है وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا तमीर करदा ज़ِرَارًا मुतल्लिक وَتَفْرِيقًا ये आयत नाज़िल हुई وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ मस्जिदन مَنْ حَارَبَ اللَّهَ कुफ्रन وَرَسُولَهُ तफरीक من قبل बैन المؤمن وَلَيَحْلِفُنَّ सादन اللَّهَ अल्लाह مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى من قبل وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَكَاذِبُونَ अरदना इल्लल हुस्ना Yani वल्लाहु यशहदु kafirle yayan ve müminler arasında और वो लोग arasını açmak isteyen जाने और कुफर फैलाने ve Allah ve peygambere karşı olanlara bir sığınak kurmak isteyenler, onlar mutlaka मुहैया करने yemin ederek diyecekler ki biz hiçbir şey istemiyoruz में खाएंगे ıslah haricinde. भलाई के सिवा कुछ नहीं चाहते थे जबकि अल्लाह गवाही देता है Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Man bin Adi çağırdı ve dedi ki gidin o cami yıkın. हज़रत मालिक बिन दुशम और हज़रत मान बिन अदी को बुलाया Asım bin Adi ve और उनको मस्जिद ज़रार गिराने का हुक्म दिया Suad bin Abbas ve sair ashab da कि हज़रत आसिम बिन अदी onunla beraber gidip और हज़रत हमजा के कातिल gittiler. वाशी Şere Zurkani de diyor ki सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद के लिए भेजा था Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce 2 kişi gönderip sonra 4 kişi onların yanına yollamış da olabilir. मज़ीद 4 अफराद उनकी आनत के लिए भिजवा Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yıkılması ve yakılmasını मस्जिद ज़रार की तरफ emretti. इरशाद फरमाया कि उसे गिरा दें और आग लगा Hazreti Malik her 2 kişiye dedi ki beni bekleyin, ben gelinceye kadar bekleyin. दोनों साथियों से कहा कि मेरा इंसान Nitekim यहाँ तक कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ akşam ve yatsı yakın खजूर की vakitlerinde onlar bu Mescid-i Zarar denilen और ईशा के दरमियान yere gittiler. मस्जिद ज़रार के पास पहुँचे और वहाँ जाकर Orayı yaktılar ve oradakiler oradan kaçtılar. उस वक्त इस मस्जिद के बनाने वाले वहाँ मौजूद थे Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında वो इधर उधर भाग गए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जगह Asım दी को देनी bir चाहिए कि वो इस जगह Adi'ye dediler ki sen लेकिन आसिम बिन oraya ev yap. मदद की कि इसके बारे में अल्लाह ताला ने जो नादिल करना था कर दिया ये ऐसी जगह है Resulullah aleyhi ve sellem dedi ki sen oraya kendi evini yap ama o dedi ki ya Resulullah आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे साबित बिन अकरम Allah oraya için indireceğini indirdi. Sabit bin Adi'ye dedi bir söyleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona söyledi ve o evi yaptı orayı. इब्ने इसहाक ने मस्जिद ज़रार बनाने वाले मुनाफिकीन के नाम Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin जो तो alimler rahmet ve onun gönül genişliğine bakın. सी रहमत Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her adımda और अफव entrikalarla, planlarla karşı karşıya kalıyordu. कदम पर मुनाफिकीन की तरफ से खतरनाक साजिशों का सामना Onların entrikacı olduğunu biliyordu और कत्ल तक की साजिशों का सामना ve onların açıkça yakalanmalarına rağmen लेकिन onları affediyor. इस हालत में रंगे हाथ में पकड़े भी जाते हैं Sadece eğer bir yerde devlet ve nizam tehlikedeyse orada bir ceza verdi रहे सिर्फ वहाँ ve orada da sadece रियासत tehlike ortadan çıkmasını sağladı. और वहाँ Halbuki diğer cezalar da verilebilirdi. कि वो ख़तरा ख़त्म हो जाए वरना वहाँ भी सख्त सज़ाएं नहीं दी गई जबकि दी जा सकती थी Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh şöyle diyor, Resul-i Kerim रज़ियल्लाहु ने मुनाफिकीन के किरदार का जिक्र करते हुए Kuba mescidinin yıkılmasını vahiyle नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम emretti. ने वही से हुक्म दिया Münafıklar orada namaz bahanesi toplanıp नाई है नाई थी fikir alışverişinde bulunmak istiyorlardı.
और मुनाफिकाना bu मशरक़ी kadar büyük वो गिरा दी जाए। tehlike ve şerre rağmen मुसलमानों की Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara नमाज पढ़ा कर bir ceza vermedi. बावजूद इतनी बड़ी शर्त Sadece tehlikesinin bertaraf olmasını sağladı. सजा नहीं दी। पता लग भी गया था Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine ve Ansar'ı sevgisiyle ilgili bazı rivayetler vardır. मदीना और अंसार से मोहब्बत के इजहार का Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine geri geldiğinde कि कम वेश 2 माह के सफर के बाद हजरत yoldayken मदीना वापस तशरीफ ले आए। तशरीफ o Medine görür görmez मदीना और अहले मदीना से şöyle dedi. मोहब्बत का इजहार Hazihi daveti. कि यूं ही आप Haza Uhud. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की बस्ती में Jabal yuhibbuna ve nuhibbuhu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़े ही दावत हो व हाज़ा Medine'nin bir adet युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। tabadır. Bu o यानी dağdır. Biz onu, o da bizi seviyor. ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। यानी मदीना की एक जगह İşte Uhud aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini söyledi. Çünkü bu makamda Uhud savaşı esnasında ashab-ı kiram büyük vefa ve ihlas gösterdi. दास्तान सहाबा ने अपने खून से रकम की थी। आप O सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कभी şöyle buyurdu. Medine'ye रिवायत में है çabuk नबी सल्लल्लाहु varalım. अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मदीना Ve dedi ki ben size इसलिए जो तुम में Ansar'ın जल्दी जाना en iyi evlerini söylemeyeyim mi? जल्दी चले। और फिर ये भी फरमाया Beni Neccar, अंसार के बेहतरीन घर ना बताऊं तो सहाबा ने Beni Abdülaşar, कहा कि जरूर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Beni Haris बनी नजार के घर, फिर फरमाया बनी ve अब्दुल्ला, Ansar'ın bütün evlerinde hayır vardır. बनी साइदा के या बनी हारिस के, Hazreti Sa'd bin Ubada और अंसार के सारे घरों में ही भलाई है। एक रिवायत में कहते हैं कि हज़रत साद बिन Bu Said bin Ubada'ya birisi dedi ki biliyor musun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Sa'd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi en sonda koydu bu fazilet beyan ederken. और हमें आखिर Hazreti Sa'd Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. और अर्ज किया या रसूल Peygamber aleyhissalatü vesselam cevaben şöyle buyurdu. अंसार के घरों की फजीलत बयान की है। İşte ashab-ı kiram bakın bunu da dikkat ederdi ki ben en son mu ben zikredildim. Önce mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki senin için hayırlar arasından sayılman yeterli değil midir? ये क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम खैर वालों में से हो? इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। Önce de ले लिया मैंने, söylendiği gibi खैर वालों में शामिल कर लिया। Gazbat Huk'tan iki bir grup geliyordu. İlk münafıkların grubuydu. शुरू में बयान हो चुका है कि ग़ज़वा तबूक से पीछे Ki Allah onlara öfkeliydi. ग्रोह थे Ve diğerleri ihlaslı kimselerdi. जिनसे अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। और दूसरा ग्रोह उन लोगों पर Onlar arasında öyle fakir kimseler vardı ki और जिहाद में शामिल भी होना चाहते थे। ve ki fakirlikten dolayı katlamıyorlardı veya कोशिश के इनको जाने के वसाइल और ज़राए मुहैया नहीं हो सके, veya hastalıklarından dolayı शामिल नहीं हो सके। katlamıyorlardı. और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह तौबा आयत कान मानने में इनकी उधर को कबूल Medine'ye चुनांचे बुखारी yaklaştıklarında कि ग़ज़वा Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu insanlar hakkında dedi ki जब मदीना Medine'de पहुंचे bazı kimseler vardır. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Onları siz her vadiyi kat ettiklerinde onlar sizinle beraberdiler. ने तय की है तो वो तुम्हारे साथ साथ ही थे। इस पर O ashab-ı kiram dedi ki ya Resulallah onlar Medine'de kaldıkları halde nasıl bizimle eşit olabilirler? में है, यानी मदीने में रहते हुए Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onları Medine'dediler ama bir üzür onlara engel oldu. और बीमारी वगैरह के किसी न किसी उज़र ने उनको शामिल होने से रोका था। Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem एक और रिवायत में है Tabuk'tan geri geldiğinde Allah'a şükretti जब तबूक से वापस तशरीफ लाए ve आपने अल्लाह ताला को शुक्र şöyle dedi. फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अला मा रज़क़ना फी सफरना हाज़ा मिन अजरिन Her türlü övgü Allah'a aittir. व मिन बादना शुरका Ki o bu yolculukta ecir ve sevap verdi bize तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। ve bizi de geri kalanlarından da bazılarına bu sevapta bizi ortak kıldı. उन नेकियों से नवाजा और जो हमारे पीछे रह गए उन्हें भी ज़रूर Biz arz ettik ki "Ey Allah'ın Resulü siz de zorluklar çektiniz या रसूलुल्लाह bu yolculukta.
आपने तो सफ़र किया Ama bunlar nasıl bu ecelde size ortak olabildiler? और फिर इस अजर व सवाब के मुस्तहिक ठहरे। लेकिन ये तकालीफ Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. आपके साथ अजर व सवाब Medine'de शामिल किस तरह हो गए? bazı kimseler vardır. Onlar hiçbir adım atmadılar, bir vaadi kat etmediler. कि मदीने में कुछ लोग हैं कि ना हम किसी जगह Onlar hastalık ve bir uzurdan dolayı bizimle çıkamadılar. हमारे साथी थे Ancak onlar bizimledirler. ने हमें Allah adına yemin olsun रखा है। हम उनके मुजाहिद हैं और वो कि घरों में बैठे रहने वाले हमारे साथी हैं। onların duaları, yani arkada kaldıkları halde ettikleri dualar bizim silahlarından daha düşmana karşı güçlüydüler. उन्होंने जो दुआएं की यहाँ बैठ के घर में, वो बहुत ऐसी दुआएं थी जो अल्लाह ताला ने कबूल की है। Çok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok onlar iyi bir şekilde karşıladılar. इसी पर अहले मदीना के वालियाना इस्तकबाल का जिक्र मिलता है। Kadınlar, erkekler hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşıladı. आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए Ve onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i büyük bir sevgiyle beklemekteydiler. और क्या बचे सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और दीदार और ज़ियारत के लिए Ve şiirler okudular. Talal badru alayna min saniyatil veda. के पास आ गए और ये शेर पढ़ने लगे। तलाल बदरो Vacebaş इंसानी şükru alayna सनियात ma da खुदा lillahi da. और जब Yani dolunay वजह कुछ शुक्र veda tarafından bize geldi bize. कि 14वीं की रात का चांद हम पर सनियात अलविदा खुदा की जानब से तलू हुआ। हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया है जब तक के अल्लाह का Medine'dekilere करने वाला रहेगा। Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e içtenlikle karşıladılar. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालियाना मोहब्बत के Peygamber Efendimiz sallallahu Mekke'den Medine'ye आपका इस्तेमाल geldiğinde de bu Mekke'den Medine'ye geldiğinde bu şiirler okumuştu ve şimdi de bu मक्के से मदीना vakitte de okudular. İmama İbni Hacer gibi hadis से वापसी पर मदीना में दाखिल हुए। şerh edenler diyorlar ki ये हदीस जैसे अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी शार बुखारी का ख्याल है Hazreti Ayşe'nin rivayetinde bahsedilen şeyler Tebuk gazvesiyle ilgilidir. है उनका ताल्लुक आ हजरत O zaman वसल्लम के गज़वा तबूक से çocuklar büyükler Resulullah'ı karşılamışlardı böyle bu kelimelerle. लोगों और बच्चों ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था क्योंकि मुल्क शाम की जानब से आने वालों का इस्तकबाल Medine ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geri geldiklerini पहले मक्का öğrendiklerinde sevgiyle dışarı çıktılar से वापसी का इल्म हुआ तो वो खुशी से ve o सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए मदीने से बाहर sahibi Yazid diyor ki ben de biliyorum, ben de iyi hatırlıyorum, ben de diğer çocuklarla beraber कि मुझे याद है Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinden geri geldiğinde कहाँ दूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल ben सनियत gitmiştim गया था ve जब आप गज़वा तबूक से वापस bu şiirler Peygamber तमाम बाकी Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i karşılamak için okumuştum. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन अशार के ज़रिए इस्तकबाल किया था जब नबी करीम Bu iki olayda da bu şiirler okunmuş olabilir. Yani Medine'den Resulullah sallallahu Mekke'den Medine'ye ilk geldiğinde de ve Tebuk'tan geri dönüşünde de. और तबूक से वापसी पढ़ने का बहरहाल ज़्यादा इम्कान है क्योंकि तबूक से वापसी पर अहले मदीना पढ़ते जज्बात से मगलूब हो İşte kısacası bu insanlar आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के kendi इस्तकबाल के लिए Resulullah sallallahu duygulanarak bunlar geldiler. Çünkü bu yolculukla ilgili münafıklar çok korkunç söylentiler yaymışlardı. अफवाहें ऐसी फैला रखी थी Ve वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri geldiğinde खुशखबरी मिली ister büyük ister küçük पानी पड़ जाता है ister çocuk मदीना के मुसलमान क्या बचे और hepsi Medine dışına çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i karşıladılar. इस खुशी के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आए हों İşte bu hicrette de yani Resulullah'ın hicret vaktinde de मक्का से हिजरत पर ये bu şiirler okunmuş olabilir और ये ve इज़ात दोनों मौके पर हो bu Tebuk'ta vaktinde de okunmuş olabilir. जरूरत नहीं है लेकिन ये बात बहरहाल साहब Ama bundan कि मदीना आने के बाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो इदराक
Bundan anlaşılıyor ki बहरहाल bu vakitte yani Tabuk dönüşünde ki o Müslümanların idrakı Resulullah'ın makamı ile ilgili tabii ki hicret vaktindeki idrakından çok çok daha üstündeydi. Ve inşallah ileride de devam edecektir bu olaylarla ilgili anlatmaya devam edeceğim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر